आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने स्थान से खड़े हो जाएं। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय उपराष्ट्रपति भारत हम सबके बीच पधार चुके हैं। हम सब करतल ध्वनि के साथ अनवरत उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। आप सबसे निवेदन है कि करतल ध्वनि के साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इस महत्वपूर्ण यात्रा में आज उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और उनका आना इस अवसर को और भी विशेष बना देता है, खास बना देता है। मैं इस क्रम में निवेदन करता हूं, अपने माननीय जी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब राष्ट्रगान करेंगे, उसके उपरांत डीएवी गान करेंगे। डीएवी गान। Thank you, and a very good evening to all present. It is our profound privilege and immense honor to have amongst us the Honorable Vice President of India, also Chancellor of Delhi University, Shri M. Venkaiah Naidu. Sir, we will be eternally grateful to you for blessing us with your presence on this momentous landmark occasion and agreeing to be the chief guest this evening. A very warm welcome to you, sir. Professor Yogesh Singh, the Honorable Vice Chancellor of Delhi University, our distinguished guest of honor this evening, has been a constant source of support and inspiration for us. On behalf of the Hansraj family, I extend a warm welcome to you, sir. Also, we are honored to have Dr. Ashok Kumar Sharma, Vice President, DAV College Management Committee, as the chair for today's ceremony.
Dr. Shiv Raman Gaur, Treasurer, Hansraj College Governing Body, is also there on the dais to guide us today, and we are thankful to you, sir, for your august presence. We have gathered here today to mark the beginning of our most joyous epoch in the life of Hansraj College. Today, we enter the 75th year of our existence, an existence that has been both glorious and gratifying. I request our Principal, Professor Dr. Rama, and Vice Principal, Ms. Alka Kakkar, to escort the dignitaries to light the lamp as the students of our Music Society, Swaranjali, recite the Vandana. बहुत बहुत आभार। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। आज ये 75 वर्षों की यात्रा बहुत ही खास बन जाती है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का सानिध्य इस विशेष अवसर पर हमें प्राप्त हो रहा है। मैं विलंब ना करते हुए निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर अशोक शर्मा जी से कि वो अभिनंदन करें हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। मैं निवेदन करूंगा कि आप पौधा भेंट करके माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम सब करतल ध्वनि के साथ माननीय जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली विश्वविद्यालय के आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह सर से कि आप अंगवस्त्र भेंट करके माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। दिल्ली विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष, हंसराज कॉलेज के 75 वर्ष, दोनों ही क्षणों पर आपका विशेष सानिध्य इस अवसर को खास बनाता है। मैं हंसराज महाविद्यालय की अत्यंत यशस्वी और सक्रिय प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम से निवेदन करूंगा कि आप वेद का पूरा एक सेट भेंट करके माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करें। आपके साथ डॉक्टर शिव रमन गौर सर जो कि ट्रेजरर हैं हंसराज कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के, वो भी उपस्थित रहेंगे। हंसराज कॉलेज वेद की परंपरा, भारतीय संस्कृति का सतत संवाहक और पालक है। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे मध्य दिल्ली विश्वविद्यालय के अत्यंत ऊर्जावान, अत्यंत यशस्वी वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह सर मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा डीएवी कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के वाइस चेयरमैन आदरणीय अशोक शर्मा सर से कि आप पौधा भेंट करके आदरणीय सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं प्रोफेसर रमा मैम से निवेदन करूंगा कि आप अंगवस्त्र भेंट करके माननीय वाइस चांसलर सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं डॉक्टर गौर सर से निवेदन करूंगा कि वेदों का एक सेट गुलदस्ता भेंट करके आप स्वागत करें, अभिनंदन करें वाइस चांसलर सर का।
मैं प्रोफेसर रमा मैम से निवेदन करता हूं कि आप पौधा भेंट करके स्वागत करेंगी डॉक्टर अशोक शर्मा जी का। मैं अलका कक्कर मैम से और शैलू मैम से निवेदन करता हूं कि आप स्वागत करेंगी अंगवस्त्र भेंट करके। मैं निवेदन करता हूं प्रोफेसर रमा मैम से कि हंसराज कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के ट्रेजरार और भूतपूर्व आईएएस शिवरमन गौर सर का स्वागत करेंगी पौधा भेंट करके। मैं शैलू मैम से निवेदन करूंगा कि आप अंगवस्त्र भेंट करके स्वागत करेंगी शिवरमन गौर सर का। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। इन्हीं सपनों के साथ महात्मा हंसराज जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी। एक सपना देखा था ज्ञान की उस परंपरा को बढ़ाने का जहां आधुनिकता भी हो, जहां संस्कृति भी हो और जहां परंपरा भी हो। उनकी उस यशस्वी ज्ञान की परंपरा को पूरे देश भर में और विदेशों में भी अलौकिक करने वाली हंसराज कॉलेज की पहली प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम का हम सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य हेतु आप आए। आप इस कॉलेज की पहली महिला प्राचार्य हैं, विदुषी हैं। मैं दो पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करूंगा कि मन बहुत अनमना है, चले आइए, गीत की प्रार्थना है, चले आइए, आंसुओं के उमड़ते हुए छंद में मौन की व्यंजना है, चले आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। लगभग 75 वर्षीय हंसराज कॉलेज की स्थापना वर्ष का ऐतिहासिक दिन का सम्मानित मंच के मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय माननीय श्री वेंकैया नायडू जी, हंसराज कॉलेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। नायडू जी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की छवि बड़ी तेजी से बदल रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। शताब्दी वर्ष जिनके नेतृत्व में मनाया जा रहा है, ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के डायनामिक यंग वाइस चांसलर आदरणीय श्रद्धेय प्रोफेसर योगेश सिंह, लगभग 74 वर्ष पूर्व 26 जुलाई 1948 को जिस समय डीएवी मैनेजिंग कमेटी ने एक खास उद्देश्य के साथ हंसराज कॉलेज की स्थापना की थी, उस डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय ए.के. शर्मा सर। एनईपी को आगे ले जाने का दायित्व जिन पर है, डीएवी ने एनईपी को मद्देनजर रखते हुए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया। हायर एजुकेशन के डायरेक्टर हंसराज कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के ट्रेजरर आदरणीय डॉक्टर शिवरमन गौड़ जी, मंच पर उपस्थित प्लेटिनम जुबली कमेटी की कन्वीनर और उनकी पूरी टीम, मेरे सामने दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, हंसराज कॉलेज के एलुमनाई मेंबर्स, हंसराज कॉलेज का टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, हंसराज कॉलेज के माध्यम से भारत का भविष्य संभालने वाले इस देश के युवा विद्यार्थियों, आज आपको बहुत बहुत बधाई, आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हंसराज कॉलेज का जन्मदिन है सर। आज हंसराज कॉलेज 75 वर्ष का हुआ। 75 वर्षीय हंसराज कॉलेज के लिए आज उत्साह का दिन है, उल्लास का दिन है, उमंग का दिन है। लेकिन इसी उत्साह, इसी उल्लास, इसी उमंग के साथ साथ सर आज संकल्प करने का दिन है। 74 वर्ष पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में खुल चुका था। दिल्ली विश्वविद्यालय के कोने में सेंट स्टीफेंस कॉलेज खुल चुका था। उस समय डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी को लगा कि आने वाले समय में
हो सकता है इस राष्ट्र को भारतीय मूल्यों के संरक्षण की आवश्यकता पड़े, हो सकता है इस राष्ट्र को मानवीय मूल्यों की सुरक्षा की आवश्यकता पड़े। उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में मैनेजिंग कमेटी ने एक छोटा सा कॉर्नर, सर एक छोटा सा कॉर्नर, ये कॉर्नर ऐसा था जहां दिल्ली विश्वविद्यालय की गुफाओं के बीच में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए यहाँ पर जितने फ्रीडम फाइटर से इन गुफाओं में छिपा करते थे। डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने सोचा इन्हीं गुफाओं के बीच में से इस राष्ट्र का भविष्य तय होगा और इस कोने को चुन लिया हंसराज कॉलेज की स्थापना के लिए। सर, जो दिल्ली विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, देश 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है, विधाता का आप करिश्मा देखिए। आज कारगिल दिवस है, आज ही के दिन, कारगिल दिवस के दिन हंसराज स्थापना का 75वां वर्ष पूरा हो रहा है। मुझे लगता है आज हमारा संकल्प करने का दिन है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के आदरणीय प्रोफेसर योगेश सिंह के समक्ष, क्योंकि उन्होंने एनईपी के लिए जिस जोश के साथ सर आपने काम शुरू किया है, लंबे अरसे के बाद, लगभग 15 वर्षों के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में न केवल प्रमोशन शुरू हुई है सर, आपने परमानेंट अपॉइंटमेंट शुरू की है। आपने जो हमें एनईपी के माध्यम से आपने जो युवा पीढ़ी को ये 95%, 100% इसकी भागदौड़ से, इसके कशमकश से मुक्त करके एक एग्जाम के माध्यम से सबको समान अवसर देने का बीड़ा उठाया है। सर, आपकी उपस्थिति में आदरणीय नायडू जी आपके समक्ष, क्योंकि भारत में लगभग 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इस सरकार ने हम सबको एहसास दिलाया भारत हमारा है, हम भारत की छवि को सुधारेंगे। जिस समय भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, जिस समय एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिस समय हम सपना देख रहे हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है, सर आपके सानिध्य में और डीएवी की स्थापना में जिन लोगों का योगदान है, सर आपकी उपस्थिति में आज हंसराज कॉलेज आप सबके समक्ष एक संकल्प लेता है। सर, हम विद्यार्थियों को डिग्रियां देते हैं, हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमारे शिक्षक, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ सब समर्पित होकर काम करते हैं। 75 वर्षीय हंसराज के लिए अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। सर, वैदिक संस्कृति से जुड़े भारत का हमारा एक सपना था। डीएवी ने हंसराज कॉलेज की स्थापना एक उद्देश्य से की थी कि हम मनुर्भव का सपना देखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का राष्ट्र मनुर्भव। आज हंसराज कॉलेज संकल्प करता है इस प्रांगण से हम एक एक विद्यार्थी को, एक एक शिक्षक को, एक एक नॉन टीचिंग स्टाफ को, सर हम एक अच्छा मनुष्य पहले बनाएंगे। हमारा संकल्प है मनुष्य अच्छा होगा, हम श्रेष्ठ होंगे, ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। समय कम है, लेकिन आज उल्लास के बीच में हम सब संकल्प लेते हुए अगले 25 वर्षों तक हम सिद्धि तक पहुंचेंगे। और सर, वाइस चांसलर सर, आपकी टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी टीम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर विकास गुप्ता हंसराज कॉलेज के अलमनाई हैं, इसलिए आपकी टीम बहुत अच्छी है। वेंकैया नायडू सर, आपके सुरक्षा अधिकारियों की टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है सर, पूरे समर्पण के साथ काम करती है, क्योंकि उसी टीम में हंसराज कॉलेज के एक एलुमनाई मिस्टर सरीन है। और एके शर्मा सर, आपके डीएवी मैनेजमेंट कमेटी बहुत अच्छी है, मैनेजिंग कमेटी की टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि वहां पर हंसराज कॉलेज के 3 हमारे पूर्व प्राचार्य काम करते हैं। आज हंसराज कॉलेज सर, चाहे मीडिया हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा हो, कहीं भी हो, हर फील्ड में काम कर रहे हैं यहाँ के विद्यार्थी। और हम आप आज शपथ लेते हैं आप सबके बीच में, हंसराज कॉलेज निरंतर आगे बढ़ेगा। आज हमारे अलमनाई अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। हमने जो तपस्या की है, इस तप और तपस्या के बीच में मैं कहना चाहूंगी कि मैं अकेला ही चला था, जानी मंजिलें मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता चला गया। लेकिन आज के दिन जब हम हंसराज कॉलेज का स्थापना वर्ष मना रहे हैं सर, वो अपने घर में दिया भी सलीके से जलाता है कि पड़ोसी के घर में भी उसका नूर जगमगाता है। हम हंसराज के लोग पड़ोसी के घर को भी चमकाएंगे। हम हंसराज को चमकाते हुए पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय को चमकाएंगे, हम पूरे समाज को चमकाएंगे, हम पूरे भारत को चमकाएंगे, हम पूरे भारत को एक साथ लेते हुए एक
जो सोने की चिड़िया भारत था सर, उसका आत्मगौरव हंसराज कॉलेज के माध्यम से आएगा। इसी विश्वास, इसी संकल्प के साथ पुनः मैं सम्मानित मंच के साथ साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। अंत में केवल 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगी। मनो मनो हंसो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, सबको सुखी बनाओ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much, Professor Rama. We are indeed fortunate to be led by your dynamic persona. Delhi University is celebrating its centenary this year under the dynamic leadership of Professor Yogesh Singh, its 23rd Vice-Chancellor. Under his able leadership, we will scale new heights as he efficiently steers us in the direction of the new education policy. May I now request Professor Yogesh Singh, our guest of honor this evening, to address the audience. गुड आफ्टरनून, नमस्ते। भारत के यशस्वी ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू जी, डीएवी मैनेजिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी, डॉक्टर शिवरमन गौड़, ट्रेजरर डीएवी मैनेजमेंट कमेटी, प्रोफेसर रमा शर्मा, प्रिंसिपल हंसराज कॉलेज, members of managing committee, outstanding and accomplished educationists, invited guests and my dear students, आप सभी को एक बार बहुत बहुत नमस्ते। हंसराज कॉलेज का 75वां स्थापना दिवस है और आपने अभी भी प्रिंसिपल को सुना, बिल्कुल ऐसे लगा कि सचिन तेंदुलकर अभी सेंचुरी मार के गया है, वैसी पिच पर मुझको बोलने का मौका मिला है। बहुत अच्छा मैडम ने अपनी तरफ से बात को रखा कि 75 वर्ष हो गए, भारत की स्वतंत्रता के भी 75 वर्ष, हंसराज के भी 75 वर्ष हुए और दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 वर्ष। तो कितना अद्भुत है 2022, 3 चीजों का मिलन इस 2022 में हुआ, थोड़ा किसी का पहले और थोड़ा किसी का बाद में। आप सभी को उसके लिए बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। रमा जी ने बताया कि आज ही के दिन 26 जुलाई 1948 को हंसराज कॉलेज की स्थापना हुई और उसके मूल में 2 नाम थे, एक तो हंसराज जी का नाम था और एक स्वामी दयानंद जी का नाम था। यानी स्वामी दयानंद जी का नाम होना और हंसराज जी का नाम होने का मतलब है भारतीय संस्कारों का उसके मूल में होना। और आज तो 75 साल हो गए, पौधा लगा था, पेड़ भी बना, तो आज इतना तो बनता है कि एक स्टडी किया जाए, एक सर्वे किया जाए। हंसराज कॉलेज को एक सर्वे करना चाहिए या स्टडी करनी चाहिए, वो ये तय करें कि हमारे जो 75 साल में बच्चे निकले उनमें संस्कार दूसरों से थोड़े ज्यादा थे या नहीं थे, वो ज्यादा अच्छे सिद्ध हुए या नहीं हुए, उन्होंने कैसे जीवन में परफॉर्म किया एज ए संस्कार, जैसी उनसे अपेक्षा की जाती है, ऐसा एक स्टडी होनी चाहिए कि क्या आपके विद्यार्थी दूसरों से अलग हैं। मैं मानता हूं अलग हैं, वैसे मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा मत सोचिए कि अलग नहीं मान रहा, लेकिन फिर भी कोई साइंटिफिक स्टडी होगी तो एक अच्छा रहेगा कि अगले 25 साल के माइलस्टोन तय हो जाएंगे फिर। क्योंकि आजकल सबको चाहिए कि एक और सवाल मेरे मन में कई बार आता है कि जब बात होती है डीएवी की, स्वामी दयानंद जी की, तो सत्यार्थ प्रकाश क्या है, क्या उसकी कोई भूमिका है? और हंसराज कॉलेज में या डीएवी इंस्टीट्यूशन में तो सत्यार्थ प्रकाश क्या है, सबको आना ही चाहिए। और अगर कभी कहीं पूछा जाए कि सत्यार्थ प्रकाश क्या है, वो न बता पाए तो सर्वे की जरूरत तो है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। मैं क्या, सर्वे आप कीजिए ताकि 25 साल के ठीक से माइलस्टोन बने। और आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात करते हैं, जिन जीवन मूल्यों की बात करते हैं, जिन संस्कारों की बात करते हैं, हंसराज कॉलेज उसकी एक लेबोरेटरी है, आगे भी रहेगा और हमारे को उनसे अपेक्षाएं भी बहुत हैं, क्योंकि उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को यदि ठीक तरह से इंप्लीमेंट करना है तो उसके मूल भाव में भारत के संस्कार हैं। दयानंद सरस्वती जी जो 1883 में तो चले भी गए,
उन्होंने 1876 में एक नारा दिया था स्वराज का, जिसको बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया और भारत की स्वाधीनता में उसका एक योगदान रहा, स्वराज का योगदान रहा। तो अब जब 75 वर्ष की स्वतंत्रता हो गई तो ठीक से माइलस्टोन शिक्षा के माध्यम से हंसराज को भी, दिल्ली विश्वविद्यालय को भी और भारत को भी अपने बनाने चाहिए। क्योंकि आज हम जब वैल्यू एडिशन कोर्सेज की बात करते हैं कि शिक्षा में होगी, एक तो है कि कॉस्मेटिक कुछ भी डाल दीजिए, दूसरा ये है कि जो वास्तव में व्यवहारिक है उसको रखना। तो मैं समझता हूं कम से कम हंसराज कॉलेज को टीचिंग ऑफ स्वामी दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश पर 2-2 क्रेडिट के वैल्यू एडिशन के कोर्सेज चलाने चाहिए। आप बनाकर दीजिए, अभी 7-8 दिन बाद ही एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है, हम पास भी करेंगे और मैं समझता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लेना भी चाहेंगे। एक सत्यार्थ प्रकाश पे टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी के ऊपर, जिस कारण से, क्योंकि अभी क्या है 75 वर्ष के बाद हुआ क्या, अपनी चिंता करने वाले देश में बढ़ गए और देश की चिंता करने वाले कम हो गए। संविधान भी शांत है इसमें। कारण क्या है, जो संविधान बना रहे थे उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा कि 75 साल में ऐसी हालत हो जाएगी। इस कारण से माइलस्टोन बनाते हुए हम ये भी ध्यान रखें कि अपनी चिंता करने वाले जो बढ़ गए हैं, कम से कम देश की चिंता करने वाले उनसे ज्यादा तो हों, तभी तो ये देश सुरक्षित होगा। इसीलिए हंसराज कॉलेज नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन की एक लेबोरेटरी बने और दूसरे संस्थान इसको फॉलो करें, ऐसी हमारी अपेक्षा हंसराज कॉलेज से है। और आप ये कर सकते हैं, आप में क्षमता भी है, एक सोच भी है, संस्कार भी है और मूल रूप से भारतीय परंपरा। आपने बताया कि गायत्री मंत्र आपके यहाँ चलता है, सुबह भी चलता है और शाम को भी चलता है, तो आप लोग सुनते हैं। हो गया मेरा, बस खत्म। तो गायत्री मंत्र आप सुनते हैं, तो उस गायत्री मंत्र के भाव को अपने अंदर लाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कैसे उस भाव को हम डालें, ये एक चैलेंज है, पर आप लोगों को करना भी चाहिए क्योंकि देश हमसे अपेक्षा रखता है। एक हरिओम पवार जी ने एक लाइन I share with you a feeling of being sorry that we have been denied by unforeseen circumstances to miss our worthy president of our institution, Dr. Poonam Suryaji. He has been suddenly taken unwell, necessitating his remaining confined to his house. We all know Poonam Suryaji has an exemplary vision for shaping the destiny of the DAV system. In his inability to be with us on this occasion for circumstances beyond control, we are missing
hearing his ideas on the 75th Foundation Day of the College. On his behalf and also that of mine, I congratulate Hansraj College for its glorious journey thus far and have every hope that under the leadership of Dr. Rama and the visionary leadership of Dr. Poonam Suryaji, the college would scale new heights and contribute to nation building and the cause of humanity. It is a moment of introspection on our educational institution and the quality of higher education in this country. I would like to recall on this occasion very briefly the foundation, the principles of this institution whose contribution has led to our witnessing the 75th Foundation Day. Dr. G.L. Datta, Shri Shanti Narayan, Shri G.P. Chopra, Dr. N.K. Oberoi, Shri S.K. Kapoor, Dr. S.L. Arora, Professor Dr. Rama, who is currently the principal. All of them have carried the mantle of building this institution to the stature which it occupies today. It is a moment of introspection also on our contributions to the quality of higher education and pledging a visionary future as a forerunner institution, not only of the DAV system, but also a prestigious constituent unit of the Delhi University. I convey our worthy President's best wishes and congratulations to all academic, non-academic, technical and professional staff for taking forward the college as an institution of the future. Thank you. Thank you so much, sir. अब समय आ गया है जब हमारे प्रेरक महात्मा हंसराज पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण पुस्तक का लोकार्पण माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से होगा। आर्य समाज और महात्मा हंसराज नामक यह पुस्तक हंस प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और इसकी लेखिका और कोई नहीं बल्कि हमारी अपनी ही प्राचार्य प्रोफेसर रमा हैं। आपको बहुत बहुत बधाई प्रोफेसर रमा। मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से आग्रह करती हूँ कि वे अपने कर कमलों से आर्य समाज और महात्मा हंसराज के संबंधों पर आधारित इस पुस्तक का लोकार्पण करें। Thank you so much to all the dignitaries on the dais. May I now request the Honorable Vice President Shri M. Venkaiah Naidu to deliver his address and thereby formally inaugurate our Platinum Jubilee celebrations. Please welcome the Honorable Vice President of India with a loud round of applause. हम सभी करतल ध्वनि के साथ अब उनका अभिनंदन करते रहें। अपनी तमाम व्यस्त दिनचर्या से उन्होंने समय निकाला। साहित्य, विज्ञान, राजनीति सबके कुशल अध्येता, कुशल विद्वान, कुशल वक्ता। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए उनका हमेशा विशेष स्नेह रहता है, तो आपकी इस करतल ध्वनि में वो स्नेह झलकना चाहिए कि आवाज सबको नमस्कार। डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी, प्रोफेसर योगेश सिंह जी, प्रोफेसर रमा जी, डॉक्टर शिवराम गौर जी, faculty members, distinguished guests, students and these other parents who have all made it to attend this function. बहनों और भाइयों, हंसराज कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान के 75 स्थापना दिवस पर आप सभी के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। यह भी सुखद सहयोग है कि शिक्षा और ज्ञान के इस प्रसिद्ध संस्थान का
स्थापना का अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ ही मनाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति, विचार परंपरा और शिक्षा के क्षेत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती जी तथा महात्मा हंसराज जैसे मनुष्यों के मार्गदर्शन और योगदान से हम सभी परिचित हैं। हंसराज कॉलेज इन्हीं विभूतियों के दिखाए मार्ग का अनुसरण करता रहा है, उनके दिखाए दर्शन का पालन करते रहा है। यह इन विभूतियों की शिक्षा का प्रभाव ही है जिसने हंसराज कॉलेज में ज्ञान और शिक्षा का ऐसा परिवेश तैयार किया है जिसमें विद्यार्थी का बहुआयामी विकास हो। विगत दशकों में हंसराज कॉलेज ने शैक्षणिक उपलब्धियों और उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्र के रूप में ख्याति अर्जित किया है, जिस पर आप सभी गौरव कर सकते हैं। I feel really happy to be here in the midst of all of you during the celebrations of the nationwide celebration of Azadi Ka Amrita Mahotsav, highlighting the nation's many accomplishments. We must remember that education holds the key to national development. Education is rightly seen as the most powerful catalyst that can drive a country's development by giving it a qualitative edge. It is छोड़ दे भाई, हेलो, आपस में बात मत करो. It is with this underlying objective in mind that the Government of India unveiled the four-sided document National Education Policy 2020, which is set to transform the world of education. The committee led by Professor Kasturi Rangan has done a commendable job. I can tell you frankly, I was so impressed after going through the document. All the staff, people in the managements, they should all really study the National Education Policy, and colleges and principals. They should see to it that the National Education Policy is implemented in letter and spirit. That will change the course of direction, because we were under a colonial rule. They have forced their education on us, what you call Mekare education or whatever it is. Under the influence of the Western culture also makes it imperative for us now to go back to our roots. That is possible if you implement, if you follow, if you understand, and if you practice national education policy. We need a national education policy. We are an independent country. We have an ancient civilization. We must know our roots. There should not be any hesitation in doing so. There is no politics involved in this. Some people try to politicalize, of course, that is their habit. They see politics in everything. That is their politics. We need not worry about it. We should think in terms of implementing it in letter and spirit. We must change the mindset of our youngsters. We must motivate them and tell them about the great contribution made by our forefathers, the cultural values, the ethics, the standards that are maintained in public life by our grandfather, grandparents, and also the people who are in the forefront of the independence movement. For that, one should really go to the constant assembly debates and the views expressed by great people. What is their expectation? Keeping that in mind, I feel that implementing NEP will prove to be a game changer. I'm happy that the Delhi University is implementing National Education Policy 2020 from this session
in right earnest. I compliment the University and the Vice Chancellor. Vice Chancellor. My dear youngsters, sisters and brothers, because you are all, everything has to be changed. Why these ladies and gentlemen? Why not be brothers and sisters? ये हमारा परंपरा है. तो हिंदी में तो अब देवियों और सज्जनों कहते हैं, मगर अंग्रेजी में ladies and gentlemen. And this good morning, good evening, good afternoon, you have to say good morning, then good afternoon, then good evening, and good night. We don't know whether it's going to be good night or bad night. Simple. Namaskar. Namaskar is our samskar. Morning namaskar, dophar mein namaskar, raat ko namaskar. These are all very simple things, but they are essential. We must change, and also children must initially be taught in mother tongue. First mother tongue, then go to brother tongue or other tongue. I have no problem. We have rich treasure of various languages in our country. So children must be taught because they will be able to understand better, articulate better. Then you can go to other languages, no problem. I have no problem even with English. We should learn English also, first mother tongue. Whatever language it is, Telugu, Tamil, Kannada, Malayali, Marathi, Assami, Punjabi, Bhojpuri, or Hindi. What is our mother tongue? We should really practice it at home, and we must give up this mummy, daddy, vidi, jadi, kedi culture. What is all this? Why should we call our mother as mummy? We have beautiful, in Telugu we call it as amma. अम्मा माने अंतराल से आता है, मम्मी माने मुंह से आता है. एक बार रात को प्रैक्टिस करके देखिए, आपको मालूम हो जाएगा. हृदय का अंतराल से अम्मा, अम्मी उर्दू में, ये मम्मी क्या है? These are all small things, but I am stressing them today on this historic occasion because we are celebrating Azadi ka Amrita Mahotsav. Even in Rajya Sabha, I changed some of the practices. Ministers and members used to say and raise and say, sir, I beg to lay on the table of the house. I said, why begging? Begging is banned. Sir, I raise to present a report or to lay a report. That is a practice and everybody is happily following it. And I made it now possible for members of parliament from various parts of the country to speak in their mother tongue. There is simultaneous translation. In parliament you can hear Telugu, Tamil, Malayali, Marathi, Assami, Punjabi speeches also. People are very comfortable. And there is translation. And their respective states, people from Kerala, people from Assam, they will be very happy to know their elected representatives speaking their language. In other languages, they will not be able to understand. They have been bearing with that because there was no other go. Now things have changed. They should change further. Even the university convocations, we must go for Indianization. We must have our own dress. All. Mahodaya. Why in courts also you should say Milad? Who is Lord? Those days have gone, Lord days. Respected Chief Justice, Honorable Chief Justice, Honorable Justice. I said even the chairman of the Rajya Sabha used to be called His Excellency. Whether he is excellent or not, title is Excellency. I said Adhyaksha Mahoday, Mahodayi. It is otherwise. These things looks to be very small. No, they convey a message. Some journalist asked me after becoming vice president, they came to me in a group and asked me, sir, now you have become vice president. I said, yes, I know. Again they said, sir, you have become vice president. I said, why I know? Kya? They want to say something, they were hesitating. I told them, bataiye kya hai? Boli. Sir, now that you have become vice president, what about dress? I said, no change of dress.
only change of address. From Abdul Kalam Road to Maulana Azad Road. Dress is the same. And nobody is looking down. I've been to different countries, met the people in international conferences. Except for weather, extreme cold, I don't change my dress. People started appreciating it. People started even following it also in their respect to this thing. And also we must get back to our old education, where education means not the classroom alone. Education means going to the field. Education means gardening. Education means watering the trees. Education means social work. Education means craft. Education, NCC, whatever you want. Activities. Extracurricular activities should also be there half of the time in the class, remaining half in the field. Education means visiting villages, knowing the village life. 60% of the people are living in villages even today. Understand this without knowing their problem. Education means understanding agriculture. Agriculture is a basic culture. Natural farming, organic farming, what suits us. Now slowly people are moving towards organic food. Eating the best food is also required. Best food, not eating the junk food. पिज्जा बर्गर उन देशों के लिए सूट हो सकता है, हमारे लिए सूट नहीं होता है. We have hundreds and thousands of variety of food items in India. Very difficult to remember all of them. I go around the country. I enjoy different foods. What a fantastic taste. But we try to follow West, which is not the best. You can have a test and understand those things. See the corona. The people in the rural area are comparatively less affected. Severity was less because one, their lifestyle. Second is their food habits. They eat millets, cereals, the other things which is really are proteinous. And some of us, we eat very polished rice after removing all the proteins, fiber and all. Then we eat the rice. A rice-related this thing. So we must apply our mind to all these things, and we should tell the students also, motivate them. I am not trying to give you any food code or dress code. Whatever you want to eat, vegetarian, non-vegetarian or both also, happily eat. There is no problem about that. But eat sumptuous, healthy, protein food. Otherwise you will not get the required strength. Then also physical fitness should be part of education. If you are physically fit, then you will be mentally alert. Fitness is required, otherwise people are becoming lazy, then they become crazy. And they do other things. We should see to it our children. See Olympics, what is happening. There is welcome change in the recent past, but such a big nation of 130 crore population, ancient civilization, what is our performance? Why we are lacking in all this? Why are we not focusing on sports, games? That gives you more strength. Sports make you more active. I have now entered 74. I play badminton every day morning 1 hour. Even today I play. Meeting, greeting, talking, walking, eating along with the people has been my favorite pastime. And I drive strength by meeting people. I am not that much comfortable in this post because there is a protocol. I don't want to explain in detail what is this protocol and all. But coming nearer to the people, interacting with them, talking with them, spending time with them, getting feedback should be part of public activity. And what should be our aim? One is, my advice to the youngsters is be disciplined.
discipline, number 1. Hard work, number 2. Desire to excel, number 3. Everyone must aim high, dream high, work hard, then you will definitely excel. You try to follow this. This is what Abdul Kalam ji also said. So, my dear youngsters, we must strive hard to become Vishwaguru again. We were called as Vishwaguru once upon a time. Nalanda, Takshashila, Vikramshila, Pushpagiri, a lot of education institutions, students from across the globe, they used to come and study here. But we lost in between. Now, again we must get back to that. Vishwaguru not to boss over others. India was strong, India was stable, India was rich, richer than all these countries earlier, before the Britishers came, ruled us, ruined us, rooted us and cheated us. Small countries also came and attacked us, made us colonial, this thing, because there was lack of unity. Unity is very essential. We must aim for peace. Peace is the prerequisite for progress. If you have tension, you cannot pay attention and have the retention of the same. So work for peace. Universal brotherhood. We want to be friendly with all countries, including our troubling neighbor. Understand this. Vasudhaiva kutumbakam, sarve jana sukhina bhavantu. Share and care is the core of Indian philosophy. Share and care is the core of Indian philosophy. We must focus our attention on all these things and again try to put the young minds in a proper direction. This is the duty of the universities and colleges. Education must empower, enlighten and emancipate people. We must give equal opportunities for women. 50% of the women. There should be gender equality and end to a discrimination, gender discrimination, social discrimination. They are very bad, they are very wrong. We should work for gender parity. Women, whenever they are given an opportunity, they are proving better than men in some cases. I go around the country, address number of universities, colleges, IITs, IIITs, even convocations, award functions, to my happiness, present happiness. The medals, gold medals I distribute because I can't give degree to everybody. That to take it. So Vice Chancellor does it, or the Governor does it. I give awards to gold medal winners, toppers, etc. They are organized in such a way. To my happiness. 65% of the toppers and gold medalists are girls nowadays. That is the thing. That should be followed. That should be followed. Because we are a country which respects women. Our rivers are named after women. Narmada, Tapati, Yamuna, Ganga, Krishna, Kaveri, Godavari, Mahanadi, all women. If you go through our Puranas also, all our Devatas, Devi, Devatas. If you believe in Purana, education, Saraswati Devi. Defense, Parvati Devi. Finance, Lakshmi Devi. They were the ministers. They were in charge. So why should we hesitate to give them equal opportunities or more opportunities? And also this caste system, upper caste, lower caste. Who said who is upper? This is another issue. To be debated, and youngsters must come out of this. I always tell outside, whenever I go, I tell them, leaders must be selected and elected on the basis of 4 C's. Character, caliber, capacity, and conduct. 4 C's. But some of our clever politicians have replaced these 4 C's by other 4 C's. They are caste, community, cash,
and criminality. They are ruling roast in certain areas. We must focus our attention in the first four: character, caliber, capacity, conduct, commitment. These are the areas. This should come up right from young age. Caste divisions are no good. Unfortunately, here and there, we hear stories. We read in papers, in fact, so-and-so, there is attack on Dalits, attack on so-and-so, discrimination on the basis of caste. Your greatness would be measured in terms of your contribution, your greatness, your knowledge, not by other things. We must bring those sections also along with us so that there is total integration. The Hansraj College, with its student strength of 5,000 plus, I had a meeting with the principal and other members also before coming here. One of the largest constituted colleges of University of Delhi, 26th July, 1948, 26th July, in memory of Maharshi Dayananda Saraswati and Mahatma Hansraj. The inauguration of the campus was done by our first president, Dr. Rajendra Prasad. He was an important historic personality. It was a historic moment. The association of Hansraj College with institutions like DAV and Arya Samaj that are anchored in teachings of great spiritual and social leaders and reformers like Swami Dayananda Saraswati and Mahatma Hansraj. It's a matter of added significance when it comes to the institution's duties and responsibility towards the country and society. Duties are equally important along with the rights. In our country now, in the fashion, everybody talks about rights. What about duties? Without everybody performing duties, how can they enjoy the rights? There should be focus on your duties. That also is important. The alumni of Hansraj College made exceptional contribution to the field of art, science, economics, technology, media, administration, law, politics, and other fields. Their contribution to the nation building is a reflection of the academic rigor of this prestigious institution. Our gurus, the teachers at education institutions, have had the social responsibility. I would like to urge you to relate your teachings and curriculum with the real history of India, its culture, its traditions, its folk arts and languages, dialects, and core Indian values. The commitment of the college to transforming the richness and grandeur of Indian culture is laudable. I am told that apart from the main library of the college, with modern facilities and resources, there are separate library of rare Vedic literature and texts. I was also pleased to learn that the teaching and non-teaching staff, along with the students, perform yoga every month. Yoga is for body, not because of Modi. You have to understand that some people are, तो मोदी जी का है, मोदी जी का नहीं, this is for your body. एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछा, सर योगा करने से मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा उनको, आप योग्य बनाओगे, you will become fit for anything, for everything. So do yoga. There is no religion attached to that. One boy told me, sir, yoga is very good, but I said, what is it? Ask me. He said, sir, Surya Namaskar. I understood. I said, if you have a problem with Surya Namaskar, I said, do Chandra Namaskar. No problem. Chandra Namaskar. These are all silly arguments to mislead the youngsters. Across the globe, now people are taking yoga because they realize that it's very good, simple, free, no cost is attached. One is really fit enough if he does the yoga. Mental tension also can be reduced. And you can pay more attention. This is my advice to the youngsters. A healthy body is the abode of a healthy mind. Focus on health and fitness. Shun junk food
and consume nutritious diet. Choose any activity of your preference for physical fitness and build a disciplined lifestyle. This discipline and strength of will which will you develop is bound to stand you in good stead for the rest of your life. I am glad to know that Hansraj College has arrangements for activities related to yoga. Hansraj College is guided by the vision of an organization like DAV that promotes patriotic and human values. Looking at your history, your tradition, your journey till now, and your legacy, I am confident that the teachings of Maharshi Dayananda Saraswati and Mahatma Hansraj and other great sons of Bharat Mata will inspire you to give a new impetus and direction to education, to society, and to the country as a whole. Once again, I congratulate each one of you on this 75th Sthapana Ka Amrit Mahotsav and offer my best wishes to you all for a bright future. God bless you. Namaskar. Jai Hind. हम सभी अभिनंदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय का। किसी ने खूब लिखा, सर आपकी जीवन यात्रा को ही संबोधित करते हुए पंक्तियां लागू होती हैं कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और फूलों भरी सेज तो देखी है तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। एक संघर्षपूर्ण यात्रा। बहुत बहुत आभार सर इस उद्बोधन के लिए। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच हंसराज कॉलेज गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन आदरणीय शिवरमन गौर जी हैं, आप आए। और सर एक हमें फायदा मिला सरीन सर के वहां रहने का कि वर्ड्स ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स नहीं, सर इस शब्द को पसंद नहीं करते। वर्ड्स ऑफ थैंक्स के लिए मैं शिवरमन गौर सर को आमंत्रित करता हूं। स्वागत है आपका। Namaskar. I have been assigned a very honorable, honest duty of extending words of thanks to the honorable guests here. परम आदरणीय श्री वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति भारत सरकार, आदरणीय श्री A.K. शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट DAV CMC दिल्ली, आदरणीय प्रोफेसर योगेश सिंह, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर रमा, प्रिंसिपल हंसराज कॉलेज, अजय सूरी जी, DV सेठी जी, ऑफिस बेरर्स ऑफ DAV CMC, उपस्थित देवी और सजराओं। Although I have written this thing in English, but in some words I will be using Hindi also. I take it as a great privilege to propose a vote of thanks on this momentous occasion. I wish to thank Honorable Shri Venkaiah Naidu ji, Vice President of India, for having honored us with his august presence today. Heartfelt gratitude to our distinguished guests, Dr. A.K. Sharma ji, Vice President DAV CMC Delhi, Professor Yogesh Singh, Vice Chancellor of University of Delhi, on this historic function for the gracious presence. Thank you for taking time, sir, out of your very valuable time and busy schedules. I take this opportunity to congratulate Principal of Hansraj College, Professor Rama, for the stellar leadership and guidance provided by her. You have basically listened to her with a lot of gusto and enthusiasm. She has been speaking, and great oratorical qualities she has. She steered the college to newer heights. I wish to express my sincere appreciation also to organizing committee, that is Dr. Shalu Singh, co-conveners Dr. Romila, Dr. Vijay, and their entire team for their untiring efforts in putting together 75th Sthapana Ka Amrit Maha Utsava. I also congratulate all the stakeholders of Hansraj College, the hard-working teaching and non-teaching staff, the brilliant students, the distinguished alumni, the proud parents, and the rest of this historic day. The journey that Hansraj College embarked upon 75 years ago has been gratifying, to say the least, and has contributed immensely to nation building especially and to society at large. The journey herein will require a closer assessment of the rapidly changing landscape in the fields of education, particularly higher education at national and international levels.
Therefore, there is a concomitant need to equip our students with skills that will allow them to contribute in significant manner in this evolving new era. I am confident that as Hansraj College will stand up to the challenge faced by higher education in the country, and with guidance of blessings of all distinguished intellectuals and leaders present today, as well along with the support extended by all its well-wishers, our dream of producing scholars with humane and sublime qualities based on our great Vedic heritage, as envisaged by the Honorable Chief Guest also, and on behalf of DAV CMC, governing body Hansraj College, and on behalf of worthy President, who would not be present today because of his sudden illness, and on my personal behalf, I extend gratitude to all. Thank you very much. एक दो लाइन सर इसमें आज के मौके पर 75 वर्ष का युवा बना है हंसराज, 75 वर्ष का युवा बना है हंसराज, दिल्ली विश्वविद्यालय का बन गया सरताज. So I think with these words, I hope and this NEP का जो मिशन उठाया है वाइस चांसलर साहब ने और जो होलिस्टिक एजुकेशन की बात कही है मुख्य अतिथि साहब ने, उसके ऊपर हम खरे उतरेंगे. इस आश्वासन के साथ मैं आपको विदा लेता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर. अब सभी से निवेदन है कि अपने स्थान से खड़े हो जाएं. स्वरांजलि टीम से निवेदन है कि राष्ट्रगान प्रस्तुत करें. टीम स्वरांजलि. धन्यवाद. मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ग्रुप फोटो के लिए आप स्टेज पर तुरंत आएं. आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें. हॉल के बाहर आप तभी जाएंगे जब माननीय जी हॉल के बाहर चले जाएंगे और उसके बाद जलपान की व्यवस्था भी बाहर है. सभी से निवेदन है तब तक अपने सीट पर बने रहें. ये ग्रुप फोटो हम सबके लिए बहुत यादगार होने जा रहा है. सर का इतना हमें समय मिला. मैं सर जाते जाते दो पंक्तियां जरूर कहूंगा कि वो कह के चले इतनी मुलाकात बहुत है, हमने कहा रुक जाओ अभी रात बहुत है, और आंसू मेरे थम जाएं तो फिर शौक से जाना, ऐसे में कहां जाओगे बरसात बहुत है. आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं. माननीय जी निकल जाएंगे तभी अपने स्थान को छोड़कर आप, हाँ, सूचना दी जाएगी बाहर जाने की, तभी आप बाहर जाएंगे. और बाहर जलपान की व्यवस्था. कोई भी आप में से प्लीज विनम्र निवेदन रहेगा कि अपनी सीट छोड़ के आगे नहीं आए.
आप चले जाएं।